शरणम शरणम गच्छामि। सर्वप्रथम परम जी का स्वागत और उसके बाद
जो भी ये क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन परम धाम 1337 सेक्टर 19 फरीदाबाद से अटेंड कर रहे हैं। मैं कृतिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। तो चलिए, जैसा कि माँ ने सिखाया कि हमें परम योग 5 समय करना होता है और उसमें से शाम 7 बजे का परम योग परिवार में सुख शांति, धन समृद्धि और बरकत बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और शाम 7 बजे का परम योग हम सब एक साथ करेंगे। तो शुरू करें 3 परम नाद। चरणम शरणम गच्छामि। तो शाम 7 बजे की क्लास हम सबके लिए खूब सुखकारी लाभकारी रहे, इसके लिए परम जी से अपनी क्लास परम जी को अर्पण करेंगे और परम जी से शक्ति लेंगे। तो अर्पण किस प्रकार करना है, क्योंकि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं P3Y, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो जिसमें पहला पी परम जी, दूसरा P2 पप्र परम प्रयोग और तीसरा PY परम योग, जो क्रिया अभी हमने करी। तो क्लास को परम जी को अर्पण करके हम क्लास में परम जी की शक्ति लेंगे और अर्पण इन्हीं 11 वाक्य के द्वारा करेंगे। तो चलिए शुरू करें। परम जी की शक्ति लेने के लिए ही 11 वाक्य बोलेंगे और क्लास में परम जी की शक्ति लेंगे। तो बोलिए, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार परम जी। परम जी, आज की क्लास अटेंड करने से मेरी अधिकतम इच्छाएं पूर्ण हो, संकट समस्याएं दूर हों, मुझे P3Y की अधिकतम जानकारी मिले, उचित मार्गदर्शन मिले। मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। तो इस प्रकार से हमने पत्र किया और अपनी क्लास में परम जी की शक्ति ली। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार शाम 7 बजे का क्लास न्यू पर्सन क्लास होता है और जो कि इंग्लिश भाषा लैंग्वेज में होता है। तो जिसे आज ले रहे हैं कुबेर दत्त शर्मा जी, और वह कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना इंट्रो वह स्वयं से देंगे। तो क्लास में उनको इनवाइट करते हैं। Charanam Sharanam Gachami. चरणम शरणम। My hearty welcome to all of you. My name is Kuber Dutt Sharma. I am Bharti Sharma ji's Bharti Ma's younger son, and I would like to welcome you all in this class of P3Y from Detroit, Michigan, United States of America. First of all, I would like to begin this class with thanking Paramji and welcoming you all to this class and to share with you a great news that thanks to Paramji's blessings and the hard work of me, my wife, and our family members, I was blessed that I could buy a new house, and I am hosting this class today from my new house that I've recently bought in the Detroit suburbs of Canton, Michigan. So, welcome Paramji. First of all, welcome Paramji to my new house. Welcome you all to this class. And through this class, we will talk about, learn about the process which is called P3Y. Now, why do I say it is a process? Because that is how Paramji has structured it. So, what is P3Y? As Kritika Sharmaji has already detailed, that P3Y stands for 3 P's and 1 Y. The first P in P3Y stands for Paramji.
Now, who is Paramji? Paramji, as you can see on my left shoulder, as Kritika Sharma ji is holding up, was blessed with powers that could serve others from his childhood, from his birth. He himself could not ever use his powers for his self, like physical being, but through his powers, people could make use and could get their worldly desires fulfilled, their mental peace, fulfilled, and achieve good health, prosperity, peace in life. So, in the structure of P3Y, Paramji is the soul of P3Y. The second P is Papr, which is 11 sentences. Now, Papr in the structure of P3Y is the body of P3Y. Paramji is the soul, Papr is the body, and then the third P and Y collectively becomes Param Yog. That is the mind of the structure of this P3Y. So if you had to describe P3Y, it is Paramji, Papra, Param Yog. Paramji being the soul, Papra being the body, Param Yog being the mind. And that is exactly how you use P3Y. You reach out to Paramji through the means of Papra, which is, as I've already told you, 11 sentences. Now, out of the 11 sentences, the first 8 are Paramji's telephone number or Paramji's website URL. So if you have to search for Google and you say the spelling of Google is google.com. Now, if you type GOOGLIGLVGLM, you will not reach Google. If my telephone address is 12345, but you enter 12346, you will not reach Kuberdat Sharma. You will reach someone else. Likewise, in out of the 11 sentences, the first 8 are supposed to be said the way Paramji has described them to be. Now, why is that important? That is important because they are Paramji's telephone number. That is the means that you get connected to Paramji. Now, once you've established the connection, then the ninth sentence, the ninth vakya, is your Ichha vakya, is your desire sentence. Now, that is when you will tell Paramji what your worldly desire is. That desire can be anything. Now, because today is our new person class and it's supposed to be preached in the language English. So, a new person who does not really know like how they can make use of P3Y, let me give you an example. You can go seek Paramji's blessing for any worldly desire. It can be health, it can be education. In my case, it was Paramji, I need your blessings. Please help me secure my loan for this new house. Paramji, please help me secure a good agreement on this house. Please help me secure the legal paperwork for this house. It can be anything. It can be for students, it can be Paramji, help me gain focus in education, help me retain whatever I'm learning, help me perform better in my exams. For for housemakers, it can be Paramji, please bless my house and everybody in this house with good health, with peace, with love for each other, regard for each other. It can be anything. Now, because I said that P2, Papr, is the body of the structure of P3Y. Now, because a body is a physical being, it's something that is transactional. So that is the structure of the 10th Vakya and the 11th Vakya. That is how you transact with Paramji. And the first 8, you connect with Paramji. Once you've established the connection in the ninth Vakya and the ninth sentence, you will tell your desire to Paramji and you will seek his blessings that the desire fulfills as soon as possible. Now, in the 11th and the 10th and the 11th sentence, the Vakya, you will pay Paramji's fees. Now, if you are seeking Paramji's blessings for education, then you can consider Paramji to be your principal or your dean or the highest person, whoever is in your educational hierarchy. If you are seeking Paramji's blessing for health, you can consider Paramji to be the doctor of the highest degree.
There is no better doctor in this world. Paramji had multiple masters in different fields of science. Then, if you're seeking Paramji's blessings for mental peace, then again you can consider Paramji to be a psychologist or a therapist of the utmost credentials. There is no one better than Paramji to bless you with mental peace. And then, regardingly, let's say I was seeking Paramji's blessings for my house, then he is the best property dealer in this world. There is no one better than him. So, now, why am I telling you these different forms of what you can consider Paramji to be? Is because the 10th and the 11th Vakya sentences are where you pay your fees to Paramji as for the transaction that you're seeking through Pabr. Now, the 10th is that you promise that Paramji, as soon as my desire is fulfilled, not before, but as soon as my desire is fulfilled, I will teach, I will tell three new people about Paramji P3Y. Then the 11th Vakya, 11th sentence is Paramji, as soon as my desire is fulfilled, I will give X amount of rupees, dollars, euro, whatever currency you deal with to Paramji. So this is Papra. Then comes PY Param Yog for mental peace, mental progress, mental stability, mental health, which is the mind of the structure P3Y. Now, as we did in the beginning of the class, we did Param. So there are two things, two parts of Param Yog. One is Param Swas, one is Param Nad. What we began our class with is called Param Nad. That is where you close your eyes, you make a sound when you exhale. The first part of Param Yoga is Param Swas. In that, you don't have to close your eyes, you don't have to make a noise when you exhale. Now, this was a very brief introduction to the whole P3Y. Now, I would like to walk you through P2, which is Papr, and PY, which is Param Yoga in detail. Also, we have to acknowledge that today is World Environment Day. So, what is the importance of World Environment Day? It is a day where collectively we put the responsibility on the people who are living on this planet to make sure that the survival of our future generations is possible, and we as humans who are living on this planet are responsible enough to make sure that we live a healthy lifestyle. Now, why am I talking about World Environment Day in a P3Y class? Because that is exactly why, this is one of the ways that you can seek Paramji's blessing. If you live a healthy lifestyle, if you keep cleanliness around yourself, then you can be assured that to some degree your lifestyle will be healthy, your environment will be clean. So that will be the first factor that will reduce stress in your life, that will give you a healthy lifestyle, and that will help you lead a longer and a healthier life. Now, the second aspect to that is you cannot rely on your resources around you full time. So then comes in the power of Paramji. Then, if you do P2 Pabr and you do P third P and Y Param Yog, then you can be rest assured that your quality of life will be the best that you can ever live. Also, this is a new person class. So, which is why it is imperative that we talk in detail about P2 and P3Y and the third P and Y Param Yog. So, let's begin with talking about P2, which is Param Prayog, Papr. Papr is P2. The detailed word for Papr is Param Prayog, which in English translates to Paramji's experiment. Now, why did Paramji label P2 Papr as Paramji's experiment? Because, as I already have told you, in the 10th and the 11th sentences, Vakya, the transactional fees that you pay to Paramji is as soon as my desire is fulfilled. So you are not bound by any commitment that until your desire fulfills, you have to pay Paramji's fees.
Now, because you can experiment with as many wishes that you have in your life, any worldly desires that you can think of, any, is the reason that Paramji called it Paramji's experiment, Param Prayog. Now, as I've already told you, Param Prayog consists of 11 Vakyas. We've already gone through those 11 at the beginning of this class, but let me repeat those 11 for you so that you can understand the pronunciation properly. Because in this case, pronunciation is very important because the first 8 are Paramji's telephone. If you misdial the number, then you're not connected to Paramji. Paramji is not able to listen to your desires. So, how will he fulfill? So, the first Vakya is Parmam Sharanam Gachami. Hansam Sharanam Gachami. Advaitam Sharanam Gachami. Anandam Sharanam Gachami. Charanam Sharanam Gachami. हे परम जी, मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं. फॉर फीमेल्स इट विल बी सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूं. Now, these 8 sentences in whatever language in this world that you speak will not change because telephone number always remains the same. Now, the ninth vakya, the ninth sentence is your desire sentence. That can be spoken in any language, whatever your native language be. For me, right now, it is English. So, if I have to say my desire, I would say, Paramji, please bless me, Kuberdat Sharma, with your divine power. I am about to sit down to study. Whatever I study in the next few hours, I may and I should be able to retain it till my exams and beyond my exams too. Please bless me with your divine power so that I can perform well in my exams. And once you've spoken your desire, once you've seeked Paramji's blessings, then in the 10th vakya, in the 10th sentence, you will say, Paramji, as soon as my desire is fulfilled, I will teach P3Y to one new student. I will tell Sorry, P3Y भैया. to one new person. सॉरी टू इंटरप्ट यू. इन 10th हम 10 सेंटेंस में पकड़ अमाउंट बोलेंगे. Oh, I'm so sorry. Sorry. In the 10th sentence, we will say the money that we are committing to Paramji, and then in the 11th sentence, we will commit the number of people that we are going to teach P3Y to. So the 10th sentence will be Paramji, as soon as my desire is fulfilled, I will give 1 rupee to Paramji. I will give 2 rupees to Paramji, or whatever that amount be. For students, the amount should be less. But for people, if you're doing the business, then you have to consider Paramji to be your partner and then accordingly give a percentage of your profits in Pakar. And then in the 11th sentence, you will say, Paramji, as soon as my desire is fulfilled in Pakar, I will teach one new person P3Y. Now, what is Pakar? Pakar stands for Paramji's Kar. Kar is the Hindi word for tax. So Pakar becomes Paramji's tax. Now that is just another way of saying that this is the number of people that I'm committing to tell P3Y to. This is the amount of money that I'm committing to give to P3Y, to Paramji. And then that money is used in the means of preaching and teaching and telling more people about P3Y. That is the P2 Papr, 11 sentences, 11 Vakya, using which you can fulfill any worldly desires. Now we come to the third P and Y, Param Yog. The first part of Param Yog is Param Swas, as I've already told you. There are two parts, Param Swas, Param Nad. So, the first part being Param Swas. Now, for Param Yog, there is a way that you have to sit or structure your body. You can do Param Yog while lying down on your bed, while sitting, while standing. You just have to make sure that your body is in a structure, is in a certain structure, and you can achieve Paramji's blessings through Param Yog if you have that body structure.
Now, what is the structure? Your backbone, your spine should be straight, shoulders straight, neck aligned with your spine. Your forehead should be straight, looking forward. Now, because we are talking about Param Swas right now, your eyes will not close. So, keep your eyes open. For the nose, we do not breathe through the nose. We will inhale through our mouth. So, if you have to inhale through our mouth, what we can do is keep our lips open and our teeth above each other. So, with our mouth open, teeth above each other, we'll take a deep breath, as deep as we can. Then our lips will close, our teeth will open, and we will exhale through our nose. Let me show you how to do it. So, spine straight, neck straight, forehead straight, eyes open. Do not breathe through your nose, just breathe through your mouth with your teeth above each other. Simple. I just demonstrated two Param Swas. It was very simple. So now, why did Paramji enable doing Param Yoga through this means? Because this can be done in any physical setting. So if you're in a school in your class and as a student you cannot focus on your studies, just simply, without anybody around you knowing what you're trying to do, you can simply do Param Swas. If you're in an office and you're working for someone and something happened that you cannot focus on your work or you want to achieve mental peace, just do your keep your spine straight, neck straight, forehead straight, and you can do param swas in any physical setting that you can think of. Now if you're lying down on a floor, on your bed, or anywhere else, just make sure that you don't have a pillow under your neck. That will align your neck and your spine to be straight. If you're standing, just make sure that you stand straight. If you're sitting, just make sure you sit straight, and that is all that is required. Now, for the second part of Param Yoga, which is Param Nad, which we started with our class with, the setting is more or less the same. Spine straight, neck straight, forehead straight. Now, in Param Nad, our eyes close. Again, we do not breathe through our nose, we breathe through our mouth. With the lips open, teeth above each other, we take a deep breath. Once our lungs are full, we'll close our lips, open our teeth, and breathe throughout the nose, like breathe through the nose. Exhale through the nose with a sound similar to that of a bee humming or the end of the part of chanting Om, which is mm. So, doing this nad, this humming sound, you will exhale. So, I will now demonstrate two param nad. Look at how I do it. Spine straight, neck straight, forehead straight, eyes closed. Do not breathe through your nose, breathe through your mouth. Lips open, breathe in. Mm. Mm. As simple as that. So, Param Nad can be done in any setting that you are safe in, that people around you will not mind you doing Param Nad, Param Yog, because you make this humming sound. As Kritika Sharma ji already told at the beginning of this class, that you ideally should be doing Param Yog at least 5 times a day. And in multiple classes, in almost every class, she or Bhartima tells you what times to do it at. So make sure that you make Param Yog to be a part of your lives. Make sure you do it at least 5 times. Now, for students, it is imperative, or at least I used to do Param Yog every time before I used to sit to study. Now, what that helped me achieve was focus. When you sit down to study and you do P3Y and Param Yog specifically, just before you're sitting down to study, you will be able to focus better in your studies. You will be able to retain the knowledge or whatever you're learning in that specific period of time for a longer period in your life. You will definitely perform better in your examinations.
Now, I was once a student. I Let me tell you about my qualifications. I actually should have started with that. So, as I've already told you, my name is Kuberdat Sharma. By profession, I am a software developer. By qualification, I have a double master's in computer science. I have a bachelor's in computer science, and I achieved all this only through the means and the blessings of P3Y. So I was once a student. I did P3Y. I followed the means of P3Y to achieve success, to come to the US, get my master's, and then again I seeked Paramji's blessings to get a good job, to secure a good job. Now I'm working as a successful software developer here in the United States. But even right now, I am still a student. One of the means of P3Y. And two, I am currently training for my private pilot license. So even right now, every time before I go flying, every time that I sit down to study about flying, I do P3Y. I seek Paramji's blessings. And I would also like, this is a class and a means of sharing our experiences through P3Y that we've achieved through our time. So I would like to share my experience that very recently, just a few weeks ago, I did my first solo flying lesson. So I was all alone in the flight, in the plane, and I was flying solo. So Congratulations, Bhaiya. thank you. Thank you. So only through Paramji's blessings was I able to achieve that. So even before I went out flying solo, I did my P3Y. I do my P3Y before I leave my house to go flying. But even when I was in the plane about to fly solo for the first time, I again seeked Paramji's blessings. So that is my latest experience. Apart from me being able to buy this house, I've already told you that I have a double masters that I achieved using Paramji's blessings P3Y. And again, I've wholeheartedly, I would like to share this amazing news that my mother Bharti Ma has come here to visit us and bless us, like me, my wife, and our household with her blessings, with Paramji's blessings, because she is such a powerful medium to get Paramji's blessings that her presence alone invites Paramji's power to any place specific. So wherever she is present, the power, the divine power of Paramji flows through her, which is why it is important that you attend these classes through the means of online media, and whenever possible, come physically to Paramdham, which is house number 1337, sector 19, Faridabad. Or there is another convenient means. If you cannot travel to Faridabad, you can invite Bharti Ma and her Pracharak team to your household, to a place near you, and request them to conduct a P3Y class. Now, what happens when you do this? Again, as I've already told you, through the means of Bharti Ma, Paramji's divine power flows to that place, to that household, to the people around you, or like yourself, you and the people around you. And that is why we attend these online classes. So now I would like to invite Bhartima. She will take over the class. She will, you know, also share quickly, tell you about P3Y and do the P2 pub that will help you all achieve success, a good life, a healthy life. And it is now Charnam Sharnam Gachami from me. Thank you so much. I thank all of you who are online to attend this class today with me. Charnam Sharnam Gachami. Now I will invite Bhartima. Chanam Shanam Gachami, Bhaiya. Thank you so much, Bhaiya.
शरणम शरणम गच्छामि। सर्वप्रथम परम जी का स्वागत और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा कृतिका जी ने कहा सब क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी का मैं भारती शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को परम जी का आशीर्वाद मेरा ढेर सारा स्नेह आप सभी का साथ है ही। तो अभी आपने कितना सुंदर एक्सपीरियंस अनुभव सुना। तो ये न्यू पर्सन के लिए भी हो गया एज वेल एज जितने भी लोग P3Y में चाहते कि भाई हम आगे भी P3Y से लाभ लेकर के और औरों को भी P3Y बड़ा स्मूथली बताते रहें। तो क्लासेस के बारे में बताना या उन्हें क्लासेस शेयर कर देना ये सब अधिकतम लाभ लेने का तरीका है। तो चलिएगा आज की क्लास का अब अगला लाभ वो है पप्र, क्योंकि आज संडे रविवार आज का दिन होता है सुबह 11 बजे P3Y लक्ष्मी समृद्धि क्लास करने का। और क्योंकि इस क्लास में कृतिका जी के द्वारा शक्ति ली जा चुकी है, कुबेर दत्त शर्मा के द्वारा पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो अब हम सीधा 3 परमनाथ के साथ 11 वाक्य करेंगे और उसके साथ अपनी इच्छा बोलेंगे। तो आप किसी भी एक इच्छा को आप जो भी इच्छा लेकर के आप यहाँ आए हैं, इस क्लास में आए हैं, वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। जैसे कि पहले बताया कि लक्ष्मी समृद्धि, तो हमने सुबह पप्र किया है। लेकिन अब मान लीजिए कुछ का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि वो P3Y बरकत कार्ड रिचार्ज नहीं कर पाए, कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने रिचार्ज नहीं किया बरकत कार्ड तो पप्र भी ना कर पाए हों। तो आप अभी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप अपना लक्ष्मी समृद्धि पप्र भी कर सकते हैं। तो एक लाइन में बाकी जो आप जिस भी इच्छा से आए हैं आप अपनी अपनी इच्छा बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे 3 परमनाथ। बोलिए परमं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी को नमस्कार करती हूँ। नमस्कार परम जी। बोलिए परम जी, परम जी, आज शाम 7 बजे की इस P3Y क्लास में आज शाम 7 बजे की इस P3Y क्लास में अपनी शक्ति दो। अपनी शक्ति दो। आज का P3Y करने से आज का P3Y करने से मेरी विशेष इच्छा, मेरी विशेष इच्छा, मेरे व्यापार नौकरी रोजगार में आमदनी बढ़े, मेरे व्यापार नौकरी रोजगार में आमदनी बढ़े, बरकत बढ़े, बरकत बढ़े, परिवार में सुख शांति बढ़े, परिवार में सुख शांति बढ़े, अनावश्यक अनावश्यक अनुचित खर्चे ना हो, अनुचित खर्चे ना हों, हानि बीमारी में खर्चा ना हो। हानि बीमारी में खर्चा ना हो। मेरी आज की विशेष इच्छा है। मेरी आज की विशेष इच्छा है। अब इसके अलावा आपकी जो इच्छा है आप अपना इच्छा मन ही मन परम जी को बोल दीजिए। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ति तक इच्छा पूर्ति तक नियमित परम योग करने से नियमित परम योग करने से मेरा मनोबल बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े, धैर्य बढ़े, धैर्य बढ़े, सभी सावधानी रखते हुए सभी सावधानी रखते हुए
कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस से, मानसिक शारीरिक रोगों से, मानसिक शारीरिक रोगों से, दुर्घटनाओं से, दुर्घटनाओं से, विरोधियों से विरोधियों से सुरक्षा बनी रहे। सुरक्षा बनी रहे। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में मन ही मन भेंट राशि अर्थात पैसा स्वयं से निश्चित करें। परम जी को दूंगी। परम जी को दूंगी। 1 लीटर जल चढ़ाऊंगी। 1 लीटर जल चढ़ाऊंगी। 1 पुष्प चढ़ाऊंगी। 1 पुष्प चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। P3Y सिखाऊंगी। शरणम शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि। चलिए, तो अभी हमने अपनी इच्छा बोली, परम जी से हमने लाभ लिया। तो लीजिएगा, अब आप जैसा मैसेज आया मेरे पास कि बरकत कार्ड रिचार्ज नहीं कर पाए, तो लीजिएगा कृतिका जी अपने हाथ में P3Y बरकत कार्ड चित्र रहेगा आपकी तरफ। ठीक, तो देखते रहें बरकत कार्ड में। शरणम शरणम गच्छामि। तो आज महीने का पहला रविवार है, तो पहले रविवार को हमारे सभी साहित्य रिचार्ज होते हैं जो सुबह 11 बजे का क्लास में हो चुके हैं। ये यदि किसी का कोई एक रह गया तो हमने रिचार्ज करा दिया है। ठीक है, जिनके पास सभी साहित्य नहीं है वह सोमवार सुबह 11 बजे का क्लास तो साप्ताहिक पत्र करने का क्लास होता है और शाम 7 बजे का क्लास P3Y साहित्य की जानकारी, उनका महत्व और सभी साहित्य लेकर के सुखी बनने का क्लास होता है। तो इसलिए यह क्लास आप अवश्य अटेंड कीजिएगा। कृतिका जी ने आगे क्लासेस के बारे में जानकारी और दी भी है। तो चलिएगा, अब लेंगे हम पीने का जल भोज भेंट। लीजिएगा, देखते रहें या हाथ लगाएं जैसा भी संभव। शरणम शरणम गच्छामि। तो इस पीने के जल भोज भेंट में परम जी ने शक्ति दी, इनका प्रयोग करेंगे, स्वयं भी सुखी स्वस्थ रहेंगे, परिवार को भी सुखी स्वस्थ बनाएंगे। तो चलिएगा, अब आगे का क्लास अर्थात प्रार्थना का लाभ और उसके साथ में आगे की सूचनाएं और सुरक्षा जल कृतिका जी परम धाम से सिद्ध करके देंगी। तो सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि माँ। थैंक यू सो मच। एंड कुबेर भैया के लिए भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि बहुत अच्छा रहा उनके साथ क्लास लेना, तो बहुत सारे लोगों ने उनके लिए भी कहा है। चलिए गुड, मैं उन्हें बोलूंगी जरूर। थैंक यू। चरणम जी, शरणम गच्छामि। शरणम शरणम गच्छामि माँ। चलिए, तो आज की क्लास में प्रार्थना है। एक बार मैं प्रार्थना सभी
परम जी को रीड कर देती हूँ और उसके बाद परम जी को अर्पण करेंगे। डिम्पू राणा जी की तरफ से, मेरे बच्चे शिवांश राणा, सूर्यांश राणा बुरी संगत में ना पड़े, उनका मन पढ़ाई में अधिकतम लगे और मेरे पेट का इन्फेक्शन जल्द ठीक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। राधिका अरोड़ा, कल मेरा 3rd सेमेस्टर का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हो जाए, परम जी से प्रार्थना। मेरे नए जॉब के लिए प्रार्थना, रुका हुआ पैसा जल्द मिले उसके लिए प्रार्थना। मेरी माइंड की नर्वस सिस्टम ठीक हो, मुकेश माहेश्वरी जी की तरफ से प्रार्थना। करण, तनु, डॉली, अमन के लिए प्रार्थना, करण के काम जल्द हो, दुकान की खूब सेल हो, परम जी से प्रार्थना। मेरे पति की तबीयत अच्छी हो जाए, मेरी बेटी नेहा की शादी हो जाए, गीता जी की तरफ से प्रार्थना। वीरेंद्र वर्मा जी ने लिखा है, मेरी बेटी शानवी जल्द स्वस्थ और निरोग हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। नीता कुंदन पटेल अहमदाबाद से क्लास अटेंड कर रही हैं, उन्होंने लिखा है, जी आप न्यू पर्सन हैं तो आपका वेलकम है हमारे इस क्लास में। दीपिका सिद्धार्थ जी ने लिखा है, मेरे पति सिद्धार्थ की बिजनेस में सफलता मिले, बच्चों के एजुकेशन पढ़ाई अच्छा हो, उसके लिए प्रार्थना। जी मोनी कुमारी, मेरा पार्लर अच्छे से चले, परम जी से प्रार्थना। मेरे व्यवसाय में लाभ, उन्नति और वृद्धि के लिए प्रार्थना। सुंदरम पटेल, उन्हीं की तरफ से मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्रार्थना। मेरी और मेरी बहन का वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे, प्रार्थना। मेरा और मेरी वैवाहिक बहन का परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिकतम अनुकूल हों, इसके लिए प्रार्थना। दीपिका सिद्धार्थ, मेरी स्टिचिंग में भी सफलता मिले, इसके लिए प्रार्थना। गौरव की स्टडी के लिए प्रार्थना। रश्मि बाला, मेरे प्रेयर की विशेष की फुलफिलमेंट के लिए प्रार्थना। पन्नालाल राम, मेरा लक का घाव धीरे धीरे ठीक हो जाए, प्रार्थना। आयुष राज, आदर्श राज, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रार्थना। मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। मौमिता चक्रवर्ती जी की तरफ से। इसके अलावा अर्चना झा ने बरकत कार्ड के लिए लिखा है, जो कि माँ ने रिचार्ज करा दिया है। नीलन सांगवान जी की तरफ से, परम जी और भारती माँ को प्रार्थना, कल मेरे मुंह के छाले ठीक हो जाएं, कि मेरे मुंह के छाले ठीक हो जाएं। ओके जी। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब एग्जाम क्लियर हो जाए उनकी, उसके लिए प्रार्थना। और मेरे बेटे ध्रुवांश का मन पढ़ाई में अधिकतम लगे, सोनिया सोनी की तरफ से प्रार्थना। मेरे डैडी की तबीयत ठीक हो जाए और मेरी सिस्टर नेहा की शादी हो जाए, उसके लिए प्रार्थना। जल्द शादी के प्रस्ताव आए, उसके लिए प्रार्थना। जी तो लगभग सभी का प्रार्थना मैंने परम जी को पढ़ दिया है। अब प्रार्थना अर्पण करती हूँ। यदि कहीं पर कोई छूटा तो आप मन ही मन स्मरण कर लीजिएगा। मैंने सभी प्रार्थना रीड करी हैं। अब परम जी को अर्पण करती हूँ। परम जी, सभी प्रार्थना आपको अर्पण करती हूँ। जिन्होंने जिस भी इच्छा से प्रार्थना करी, सभी की सुखद इच्छाएं पूर्ण हो, संकट समस्याएं दूर हो। चरणम शरणम गच्छामि। तो चलिए अगला लाभ लेंगे सुरक्षा जल के द्वारा। तो जल में देखते रहें।
चरणम शरणम गच्छामि। ये सुरक्षा जल अर्पण हुआ। इसमें परम जी से मांगा कि इस जल को छिड़कने से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, ग्रह दोष, पितृ दोष, ईर्ष्यालु विरोधियों की बुरी नज़र का कोई भी कुप्रभाव हो तो वह दूर हो और पॉजिटिविटी बढ़े। तो इसके साथ आप सभी जानते हैं ये सुरक्षा जल का लाभ होता है। इस जल को छिड़कने से हमें ये सब मिलता ही है। तो पहला लाभ स्वयं लीजिए और फिर दूसरे लोगों को गाइड कीजिए, उनको बताइए कि ये सुबह और शाम की क्लासेस अटेंड करने से, पीने छिड़कने का जल बनाने से कितना लाभ हमें होता है। तो इस प्रकार आप गाइड कीजिए। बाकी आपको क्लासेस की जानकारी मैंने दे दी। कल सुबह साप्ताहिक पत्र क्लास, शाम 7 बजे P3Y साहित्य जानकारी क्लास और रात्रि 9 बजे पंजाबी क्षेत्रीय भाषा क्लास है, जिसकी संचालक हैं सोनम बंसल जी। और ये क्षेत्रीय भाषा का क्लास गूगल मीट पर होगा। तो इस क्लास का लिंक लेने के लिए आप भारती माँ को व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हमारे P3Y एनसीआर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ऐड हो सकते हैं, जिस पर आपको सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पर मिलती रहेंगी। तो चलिए अब क्लास के समापन में परम जी का धन्यवाद करेंगे, 3 परमनाथ करेंगे और परम जी का धन्यवाद। तो शुरू करें 3 परमनाथ। बोलिए थैंक यू परम जी, थैंक यू परम जी, थैंक यू परम जी। हे परम जी, अपनी ऐसी ही कृपा, अपना ऐसा ही आशीर्वाद भविष्य में भी मुझ पर, मेरे परिवार पर, हमारे काम पर, व्यापार नौकरी पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी सद्बुद्धि पर बनाए रखना। चरणम शरणम गच्छामि। तो परम जी से निवेदन, आपकी आज की रात और कल का आने वाला दिन खूब सुखकारी रहे। चरणम शरणम गच्छामि।